Maha Yuti got great numbers. The political showdown now continues over EVMs. Now, Maharashtra Deputy CM Eknath, in fact, the Deputy CM Eknath Shinde is hit out at MVA saying that opposition only targets EVMs when they are losing. He further said that NDA never blames EVMs when they get less seats. So, once again, Eknath Shinde, the Maharashtra Deputy CM now, has hit out at the opposition, at the MVA, saying that because they got less numbers, so that is why they are once again blaming it on the EVMs, something that they have done in the past. I just want to go ahead and play out the reactions coming in on the story. तो आज शपथ ले लिया ईवीएम का उनका आक्षेप खत्म हो गया। अभी ईवीएम का घोटाला खत्म हो गया। कल शपथ नहीं लिया ईवीएम के वजह से, आज शपथ ले ली। इसका मतलब ईवीएम का आक्षेप खत्म हो गया क्या? जब वो लोग जीतते हैं, जिनकी जीत होती है महाविकास आघाड़ी की, तब ईवीएम अच्छी रहती है, और हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। अभी हार में झारखंड जीत गए, कर्नाटक जीत गए, प्रियंका गांधी जी जीत गई, या नाना पटोले जीते, कई लोग यहाँ जीते। क्या वहाँ ईवीएम ठीक थी? और जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम खराब। ये दोगली राजनीति है। ये रोने वाली बात है। और इतना ही मैं कहूँगा कि अभी विपक्ष ने जो मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने दिया है, सरकार के काम के बलबूते पे, मैंने कहा था कि सरकार ने जो 2.5 साल में काम किया है उसका अंजाम इस चुनाव में दिखेगा। लाडली बहनों ने, लाडले किसानों, लाडले भाइयों ने भरपूर मतदान किया है, और इसी के वजह से इतनी बड़ी जीत हुई है। अब इस जीत को स्वीकार करो, सच्चाई को स्वीकार करो। All right, let's move ahead right now. Now, we see a new development where the opposition is in opposition with each other. The India alliance seems to be struggling to even remain an alliance anymore. Rifts within the parties are widening, getting bigger and bigger. Where one hand, TMC has called for Mamata Banerjee to take over the India alliance's leadership, the RJD, on the other hand, is batting for Lalu Prasad Yadav to head the Indy bloc. What will happen next? Well, for that, take a look at this report. The Indy Alliance is trying its hands at refurbishing its image, and the change in leadership seems to be the maiden step. The rifts in the opposition alliance are widening, and the call for who will lead the alliance next is hanging in balance. The Trinamool Congress has moved chorus over Bengal Chief Minister Mamata Banerjee to take over the Indy Alliance's throne. Meanwhile, Mamata Banerjee, in a reported statement, has claimed that she was the brain behind the formation of the Indy Alliance.